Okay, so we were solving linear system of ODs, and the first case was if we get different eigenvalue and corresponding eigenvectors are linearly independent, then solutions are in the form of x e power lambda t, where x is eigenvector and lambda is eigenvalue. So to be definite about notation, so I'm writing it now eigenvector v1 v2, so that is standard notation, and eigenvalue lambda. Of course, if you have a 2 by 2 system, then it is also a column vector. So we stated the theorem which says that if coefficient matrix has real eigenvalues, need not be distinct, but eigenvectors, you got n linearly independent eigenvectors. Then solutions are in this form, so x1 e power lambda 1 t, etc. And we verified that in fact these satisfy the given differential equation. So now our aim is to solve the system, but that is restricted to find eigenvalue and eigenvectors. And that you know from elementary linear algebra, how we find eigenvalue and eigenvector. So this is an example. Find the general solution of uh, system y dash equal to 2 4 4 2, and also solve uh, the associated uh, IVP. So same problem with one initial condition. So when t equal to 0, you know the solution. So for simplicity, I am taking 2 by 2 system. You can also apply the same theory up to 3 by 3 system, and so on. So let lambda be an eigenvalue of coefficient matrix A, then eigenvalue satisfy, you can find eigenvalue from characteristics polynomial. This is characteristics polynomial. Determinant of A minus lambda I equal to 0. So 2 minus lambda 4, 4, 2 minus lambda equals to 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, 2 minus lambda minus 16. Okay, so lambda minus 2 square, if you further factor it, so this will give you lambda minus 6, lambda plus 2 equal to 0. So we got two eigenvalue. One is 6, another one is minus 2. So I'm writing them lambda 1, lambda 2. Okay. So we got two different eigenvalue. Now we need to solve. Now we need to find eigenvectors. कैसे find करते हैं eigenvector? To find eigenvectors, corresponding eigenvectors. So we solve the system. किसको solve करते हो? इसको सॉल्व करते हो a माइनस लैम्डा आई. अगर मैं वेक्टर को v कहता हूं तो उसको सॉल्व करते हो आप. ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा 4 4 2 माइनस लैम्डा
अब आप, सॉरी ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। अब आप v को कुछ सपोज कर लो, आपने जो भी लिखना है, v1 v2 x1 x2 जो भी इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो पहला आइगन वैल्यू आपका 6 है, तो लैम्डा को 6 फिट कर दीजिए। सो 2 माइनस 6 माइनस 4 4 4 माइनस 4, तो क्या सिस्टम बना आपका? सर -4x1। -4x1। यहाँ x1 इक्वल टू x2 आ गया, बस यही मिलेगा दोनों से। ये मिलेगा सर। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आइगन वेक्टर हमेशा पेयर में आते हैं, सो यू नॉट वांट गेट यूनिक सोल्यूशन, बट यू कैन टेक एनी सिंपल। ठीक है, तो एक को पिक करना पड़ेगा आपको। सो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मैनी। दैट्स व्हाई वी से दैट आइगन वेक्टर दे ऑलवेज कम इन मल्टीपल। सो नियर बाई 1 के अबाउट लिख लो। सो टेक x2 इक्वल टू 1, तो x1 भी आपको 1 मिल जाएगा, किसी एक को ले लो। तो जो पहला आइगन वेक्टर है उसको मैं v1 लिख रहा हूं। ठीक है, इसको जो भी दोनों होंगे, एक का 1 v1 2 करना है, 1 1 2 करना है। सो दिस इज 1 1। तो कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन क्या होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन इज, से दिस इज y1, तो v1 e पावर lambda 1 t, so 1 1 e पावर 6t। वहां पे मैंने x1 लिखा था, तो बट x1 x2 हम इसको लिख लेंगे कंपोनेंट को। ठीक है, फिर दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालिए। So second eigenvalue, which is -2, you can find in any order. So ये इस सिस्टम से मिलेगा, so वहां पे लैम्डा को आप -2 फिट कर दो। 4 4 4 4। v2 को भी आप x1 x2 लिख सकते हो, दिस इज नोटेशन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x2 इक्वल टू -x1, और यू कैन राइट x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। Okay, so you can take any one. You can take x2 or x1 equal to 1. Then we got x1 equal to -1। -1। उल्टा भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 -1 या -1 1। So eigenvector is v2. This is -1 1, and solution is y2. So -1 1 e power -2 t। Okay, so finally general solution. So take the linear combination. Okay, so y will be c1 y1 plus c2 y2, and 1 1. So fit y1 and fit y2. Okay, and second part, solve the IVP. y0 equal to 5 minus 1। तो सोल्यूशन में फिट कर दो। सो t इक्वल टू 0 फिट कर दो ऊपर वाले सोल्यूशन में यहाँ पे। सो यू गॉट c1 1 1 e पावर 6t, that will be t0 1, c2 -1 1, that is also minus e power -2 is also 1. So that equals to 5 minus 1. So we got a 2 by 2 system, c1 minus c2 equal to 5, and c1 plus c2 equal to -1. So just add, you got c1
subtract, you got C2. So C1 equal to 2, C2 equal to minus 3. This is the unique solution for C1 and C2. Okay. So substitute values of C1 and C2, you got solution of IVP. So C1 is 2 and C2 is minus 3. You can write them in any order. Okay, so that you can take eigenvector 1 minus 1 or minus 1 1. So that system don't have any unique solution. But for IVP in C1 and C2, you will get always unique solution. Okay, so if you want to write components, okay, component wise, I'm writing in this example only. So what is the first component of solution? First component, what will be first? 2 e power 60 plus 3 e power minus 2. Take first part of matrix. And second component is 2 e power okay. First component, write first entries of matrix, then second component. And don't get confused with notations. This y1 and this y1, they are different. y1 हम किसको कह रहे हैं? y1 y2, these are column vectors. y2, so they are similar to y. What is y? Y is a column vector. Okay, and component means first component जो भी होगा वह variable, उसको मैंने capital लिखा है उसको. I hope you understand. So these are scalar one. Okay, so this is the scalar one. Y1 and Y2, they are scalar. But previously Y1 and Y2, they are vectors. They are column vectors. So Y1 and Y2, they are equivalent to Y. And what is Y? Y has two components. And that component I have written Y1 and Y2. So you can say this small y1 has component as y1 and y2, capital 1. So they are component. So that was 2 by 2 example. Now I'm taking one more example. So that is also important, that you may have same eigenvalue, but you also got linearly independent eigenvectors. So follow the system. This is 3 by 3. 2, 2, 2 minus 3, 2, 2, 2, minus 3. Okay. So to find eigenvalue and eigenvectors, I will skip the calculations. I hope you have studied in college or somewhere else. So everyone knows how to find eigenvalue and eigenvectors. Okay. So firstly, we find eigenvalue. So characteristics polynomial, that is determinant of a minus lambda I equal to 0. So minus 3 minus lambda, 2, 2, 2 minus 3 minus lambda. I is an identity matrix of order 3. Apply some row transformation if you want. Okay, so you can make zeros, then expand. Or you can do by direct calculation.
So I'm just solving it. So this will further factored in lambda minus 1, lambda 5 square equal to 0. So you got three eigenvalue, lambda 1, 1, lambda 2, minus 5. So we got uh, repeated eigenvalue. So lambda 2 equal to minus 5 is an eigenvalue of multiplicity 2. ओके, तो यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, या तो आपको linearly independent eigenvector मिलेंगे, then you, if you got two different eigenvector then it's okay, but if you won't get two different eigenvector then you need to reformulate, that is case 2. So we try with each eigenvalue. So start from 1, find eigenvector corresponding to 1, and then find eigenvector corresponding to minus 5. Okay, so firstly for lambda 1 equal to 1, eigenvector, let us say that is v1, that satisfy the matrix equation A minus I v1 equal to 0. ठीक है, lambda is 1, so minus 4 2 2 2 minus 4 2 2 2 minus 4. Write v1 as x1 x2 x3 equal to 0 0. Okay, so also you can apply some transformation if you want. करते थे ना लेफ्ट में, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो एटसेट्रा, और you write augmented matrix. वो क्या होती है? This one matrix plus right hand side. So you apply transformation on both sides. Okay, so apply row transformation etc. करना, which is row equivalent to और डायरेक्टली सॉल्व कर लो इसको, आपकी मर्जी है. 3 by 3 system you can solve. So 1 0 minus 1 0 1 minus 1 0 0 0 0. तो इसको सॉल्व करोगे, जैसे पहली इक्वेशन क्या कह रही है, x1 minus x3 equal to 0, so x1 equal to x3. सेकंड कह रहा है x2 equal to x3, so you got x1 equal to x2 equal to x3. ठीक है, तो क्या लें आइगन वेक्टर? वन वन ले लो, ठीक है. टेक एनी नॉन जीरो, you can take 2 2 2, you can take minus 3 3 etc. But तो एक तो मिल गया, सो सोल्यूशन क्या होगा? सो y1 इक्वल टू 1 1 1 e पावर t. ठीक है भाई,
So then find for lambda 2 equal to second eigenvalue, which is 2. Sorry, which is minus 5. So now you need to solve a minus lambda I. So बड़ा सिंपल बनेगा ये. जीरो इज आल्सो जीरो जीरो. तो क्या मिला आपको? For 3 by 3 है, you got one equation. So that's a good thing. तो 3 by 3 system है. So you need to take two variable arbitrarily. So we get only one equation. Only one equation. So we can choose x2 and x3 or x1, x3, etc. Any two arbitrarily. So if we take, now I can take 0 as well. x2 equal to 0 and x3 equal to 1. So I got x2 equal to sorry, x1 रहेगा. So x1 क्या आएगा? -1. So eigenvector is एक आपको मिल जाएगा ये -1 0 1. Also अब आपने x2 को 0 किया था, x3 को भी कर सकते हो. Also if we take x3 equal to 0, x2 equal to 1, and then x1 equal to -1. So another eigenvector is, उसको मैं v3 कह रहा हूँ. So -1 1 0. You can check that these v2 and v3 they are linearly independent. तो अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया. सो यू हैव वन आइगन वैल्यू बट यू गॉट two linearly independent eigenvectors. So for this eigenvalue you will get two solutions. So conclusion, so we get two Li eigenvectors v2 and v3. So solution, so corresponding solutions are, एक को y2 कह दो पहले वाले को, -1 0 1 e power -5t, and another one is -y3, so -1 1 0. So finally general solution is c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3. Any query? Shweta? Tanu? Are you listening? Yes, sir. Okay. Any query? No, sir.
So just find eigenvalue and eigenvectors. Even if you have repeated eigenvalue, you may get two linearly independent eigenvector. So just what is solution? Eigenvector multiplied by e power lambda t. So this was the case first, constant coefficient homogeneous system. Okay, so second case is uh, that is constant coefficient homogeneous system 2. So in this case we will get n real eigenvalue, but we want to be able to get n linearly independent eigenvectors. Okay. Okay, so A has this is 2 by 3 by 3 hai. So we will get 3 real eigenvalue, but you may get two eigenvector, linearly independent eigenvector. So firstly, I'll state the theorem, then we will verify. That is similar one stuff, but अब ये कहता है कि अगर आपको जैसे 2 by 2 है, आपको एक आइगन वेक्टर मिल गया तो दूसरे को आप पहले से निकाल सकते हो. So they are related. Okay, so let us let matrix A has an eigenvalue lambda 1 of multiplicity occurring है जो, ठीक है, कितनी बार आ रहा है, 2 या 2 से ज्यादा बार, and the associated eigenspace has dimension 1. This means that is all eigenvalues, all eigenvectors are scalar multiple of an eigen vector v1. यानी कि आपको एक ही आइगन वेक्टर मिला, बाकी you won't get any linearly independent, so they all are multiple of 1 v1. Okay, so if you have 2 cross 2 system, you need to get two different. 2 cross 2 है तो दो चाहिए ना, एक v1 एक v2, बट ये कहता कि नहीं, आपको एक ही मिल रहा है, you are getting only, and other so they are linearly dependent. So in that case you can find, this theorem says that all are scalar multiple of an eigenvector v1, then there are, please mute yourself, there are infinitely many vectors v2, so that a minus lambda 1 I v2 equal to v1. So इसका मीनिंग है, you know v1, you know lambda 1, you can find v2 from v1. So there are infinitely many vectors. So in other words, that system don't have a unique solution. Okay, then आप एक पिक कर लो, infinitely तो नहीं लेंगे ना, so we will fix one. Then y1, first one is same, and y2 v2 e power lambda 1 t plus v1 t. आप उसमें नहीं करते थे
कांस्टेंट कोएफिशिएंट ओडी में अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू आती थी तो टी से मल्टीप्लाई कर देते थे आप एक्स से। सेम ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। वी टू ई पावर लैम्डा टू, और दूसरे को क्या करो, टी से मल्टीप्लाई करके। सो देन y1 and y2 are linearly independent solutions of system y dash equal to a of y. Can you verify that this is a solution? प्रूफ कह लो या वेरिफिकेशन कह लो। सर Can you verify डिफरेंशिएट it? करके इक्वेशन में तो डालेंगे। हाँ जी, y1 और y2 को डिफरेंशिएट करके y डैश इक्वल टू ay में y1 डाल तो के हमने देख check लेंगे। किया हुआ है। We already did checked y1 है ना, पुराने केस सर 1 से। y2 को डिफरेंशिएट कर लो। हाँ, so we already know that y1 is a solution. So now you need to check y2 is also a solution. So differentiate y2. Now for y2, we have y2 dash minus a y2, ये निकालते हैं। So what will be y2 derivative? सर Lambda v2 1, लैम्डा 1 v2, v2 लैम्डा 1 e की पावर लैम्डा 1 t प्लस v1 e लैम्डा 1 t प्लस v1 लैम्डा 1 t e की पावर लैम्डा 1 t। अगली टर्म बोलो क्या है? सर v1 लैम्डा v1 v1 लैम्डा 1 lambda 1 t, हाँ प्लस v1 लैम्डा 1 v1 lambda 1 t t, e e की पावर लैम्डा 1 t फिर a y2 माइनस a टाइम्स v2 माइनस v1 t। हाँ ठीक है। यस तो इनको क्लब कर लीजिए। सो लैम्डा 1 b2 प्लस v1 माइनस a v2 e पावर लैम्डा 1 t प्लस लैम्डा 1 v1 माइनस a v1 e पावर लैम्डा 1 t भी आएगा साथ में, ठीक है। टी वाले एक अलग कर, टी ई पावर लैम्डा टी वाले अलग कर लिए और दूसरे वाले अलग। सो कैन यू से दैट राइट हैंड साइड इज 0? यस सर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू फॉर a v1 इक्वल टू लैम्डा 1 v1 होता a है। v1 equal to lambda 1 v1, and first one is also, that is a relation, सर 0 हो जाएगा वो first that is given the relation, थ्योरम में दिया हुआ है। ठीक है। रिलेशन ये पिछला है ना, a minus lambda 1 I v2 equal to v1, so that is also 0. So y2 is a solution, y2 satisfy। एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको। You need to check that y1 and y2 are linearly independent.
So we take linear combination c1 y1 plus c2 y2 equal to 0. So c1 v1 e power lambda 1t plus c2 v2 e power lambda 1t plus v1 t e power lambda 1t equal to 0. You can multiply, you can take e power minus lambda, e power lambda t you can take common, or multiply with e power minus lambda 1t. ठीक है, e power lambda 1t को कॉमन लेके छोड़ सकते हो आप. ठीक है. So you got c1 v1 plus c2 v2 plus v1 t equal to 0. You can differentiate, li check करने में you can differentiate with respect to t. So to get, then you got c2 v1 equal to 0. इसका मीनिंग c2 0 है. c2 की वैल्यू पर डालोगे तो आपको c1 भी 0 मिलेगा. अगर रिलेशन हो तो आप लिख सकते हो ना, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो. So try to find c1 and c2. So they are 0. So y1 and y2, they are linearly independent solutions. So what theorem says, mix कैसे हो गया? Okay, so this theorem says that you will get one eigenvector and you can find second eigenvector from first. And some texts, they also write in that way. चलो प्रॉब्लम से देखेंगे. v1 की वैल्यू फिट करके भी आप डायरेक्टली भी जा सकते हो. So I'm taking a 2x2 example. So for example, solve the system y dash equal to ay. So the first step is to find eigenvalue. So characteristics polynomial. So that is 11 minus lambda. इसको ओपन कर लेना. So you got lambda minus 1 square equal to 0. So you got lambda equal to 1. So lambda equal to 1 is the only eigenvalue. So it may happen that corresponding to lambda equal to 1, you may get two different linearly independent eigenvector. So that is case 1. Okay, so the first case था. तो अगर दो मिल गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो फिर दिक्कत है. So for hence for lambda equal to 1, let v1 be the, hence की तो जरूरत नहीं है. For lambda equal to 1, let v1 be the eigenvector. Then what you solve? A minus lambda I v1 equal to
0. So that is 10 minus 25, 4 minus 10. Assume it x1, x2. This is just simple 2 by 2 system. तो एक इक्वेशन ही बचेगा इसमें. So x1 equal to 5x2 by 2. यानी कि ये बचेगा 2x1 minus 5x2 equal to 0. ठीक है जी. तो क्या लें x2 को? फिर 2 ले लेंगे. So we take x2 equal to 2. So x1 equal to 5. तो जो पहला आइगन वेक्टर है that is 5 2. ठीक है जी. तो अब सेकंड क्या करें आगे? तो सॉल्यूशन भी लिख दो. सो सॉल्यूशन इज solution to corresponding this eigenvector. So that is y1 equal to v1 e power lambda t. The second solution, or precisely second Li solution, is given by, पहले आप सॉल्यूशन लिख दिया करो. ठीक है. y2 equal to v2 e power lambda 1 is 1, v1 t e power t, where a minus lambda I v2 equal to v1. ठीक है. So to find second eigenvector, you need to solve this non-homogeneous system. ठीक है. तो मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, प्रोसीजर इज सेम. सो राइट a minus I, वो लिखा है पहले आपने. v2 को सपोज कर लो एनीथिंग यू वांट, x1 x2 लिख रहा हूं मैं समथिंग को, एंड इक्वल टू 5 2. 5 2. तो अब आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है. तो इसका जो इसमें भी इक्वेशन एक ही बनेगी. हमने कहा था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो ये बनेगा x1 minus 5 by 2, यानी कि दोनों ये LD हैं. ये दो रो बनेगी इसके. अब ये नॉन होमोजीनियस है, तो आप वी कैन टेक x2 इक्वल टू 0. x1 क्या आ जाएगा? 1 by 2. और भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है. तो v2 क्या बना आपके पास? 1 by 2 0. So therefore second solution is, तो इसकी वैल्यू डाल दो. सो पहले v2 e power t क्या आएगा सोल्यूशन? प्लस v1 t, what is v1? 5 2 t e power t. एंड ये 1 by 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप बाहर भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो. ओके. सो फाइनली जनरल सॉल्यूशन इज तो ये तो हमने था कि मल्टीप्लिसिटी 2 हो, है ना. अब इससे ज्यादा हो तो
जनरल रिजल्ट भी ट्रू है, बट वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम अप, बट वी विल राइट अप टू ओनली 3 cos 3। तो इसका जो जनरल प्रोसीजर है इस केस का, that is also valid. So let matrix A has an eigenvalue lambda 1 of multiplicity greater than or equal to 3, and the associated eigenspace has dimension 1। इसमें क्या होगा, मान लो 3 क्रॉस 3 है, एक ही मिला आपको, ठीक है। देन देयर आर infinitely many vectors v2 so that a minus lambda 1 I v2 equal to v1। अच्छा, हमने v1 नहीं बताया, v1 क्या है, where v1 is आइगन वेक्टर, किसका आइगन वेक्टर है, फॉर लैम्डा 1। Okay, so there are infinitely many vectors v2। if v2 को फिक्स कर देते हैं, infinitely में से एक पिक कर लेंगे, ठीक है। if v2 is any such vector then there are infinitely many vectors v3 so that a minus lambda 1 I v3 equal to v2। यानी कि आपको एक v1 मिला, you find v2 from v1 and then third one v3 from v2। okay, then conclusion, then y1 equal to क्या बनेगा फिर, है एनी गैस, पहले वाले था जो सेम ही है, वो ये एक्स्ट्रा आ गया v3 क्या आएगा, v3 e पावर लैम्डा 1 t प्लस v2t, ठीक है, v2t e पावर लैम्डा 1 t प्लस v1 t स्क्वायर बाई 2, then y1 y2 y3 are linearly independent solutions of y dash equal to ay। ठीक है, तो एक में t से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे में t स्क्वायर बाई 2। you can verify y1 y2 we already verified, you can also verify that y3 also satisfy the equation, so I'm not going that। सर अगर ये 4x4 होता तो लास्ट में t³/6 आता या t³/3 आता? ये चलता रहेगा आगे, मैं इसके बाद स्टेट करूंगा जनरल थ्योरम, जो नेक्स्ट थ्योरम है वो स्टेट करूंगा मैं, फैक्टोरियल्स में आएगा शायद ये, फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल 2 है एक्चुअली ये। ओके सर, फैक्टोरियल 2 है ये, तो फिर आगे 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 अगले में 6 आएगा, फिर t³/6, ठीक है। बट 3 से ज्यादा हम जाने की जरूरत नहीं है हमें, यू कैन नॉट सॉल्व लार्जर सिस्टम बाय हैंड।
and it's also difficult to find eigenvalue and eigenvectors. So that is not an easy task as well. So only 9 people are there.